Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Zahida Javed, Government College, Women University, Faisalabad. Dear students of B.Ed 1.5 years second semester, our course title is Critical Thinking and Reflective Practice and course code EDU 122. And today our topic is action research. Inshallah, after this lecture, you will be able to define action research and describe when to use action research and the areas in which action research can be used. You can easily recognize the features and objectives of action research, describe the key characteristics of action research, also identify the steps in conducting an action research study, and enlist the capacities, advantages and limitations of action research. Students, there are two words, action research. First of all, we will see the meaning of research. R-E-S-E-A-R-C-H. R for rational way of thinking. E, expert and in-depth treatment. S for search for solutions. E, exactness. A, analytical analysis of acceptable data. R, relationship of facts. C for careful recording, critical observation, constructive attitude. And H for honesty and hard work in all aspects of the treatment of data. So it's mean when you do a work in rational way and treat them in depth for the search of the solution with the exactness and the data which you use, you see the relationship in that data between the variables and facts, and carefully record all the data and construct the attitude and treat that data with honesty. It's mean you are doing a research. यानी जब आप किसी भी काम को एक रेशनल वे ऑफ थिंकिंग से कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्टीज भी है, उसको बहुत डेप्थ से ट्रीट कर रहे हैं, और जब आप किसी सॉल्यूशन को सर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसके हल के लिए आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें एग्जैक्टनेस भी होगी, आपका डेटा जो होगा वो एनालिटिकल एनालिसिस होगा उसका, आपने उस डेटा के अंदर रिलेशनशिप देखा होगा डिफरेंट फैक्ट्स का, डिफरेंट वेरिएबल्स का, और उस सारे डेटा को आपने केयरफुली रिकॉर्ड किया होगा, उसको क्रिटिकली ऑब्जर्व किया होगा, और जब डेटा को आप ट्रीट करते हैं तो उसको बहुत ऑनेस्टली और हार्ड वर्क के साथ ट्रीट किया होगा. तो इसका मतलब है यू आर डूइंग अ रिसर्च. नाउ व्हाट इज द एक्शन रिसर्च? Before telling you about the action research or meaning of action research, I want to introduce about its history. Actually, in 1930s, the fields of social psychology and education have shown great interest in what has been called action research. The Kurt Lewin, who is the father of the action research, who introduced action research after the Second World War. But unfortunately in 1940 and 1950 and especially in 1960, when we treat the research in laboratories, the value of action research became decreased. यानी जब हमने रिसर्च को टिपिकली लेबोरेटरीज के साथ
किसी टेस्टों के साथ हमने उसको लिंक किया तो एक्शन रिसर्च की वैल्यू जो है वो कम हो गई. बट आफ्टर 1970 Australia gave it more importance. They gave the importance of action research and they did very much work on action research. So due to Australia's researchers, nowadays action research is very famous and very common in the all era of the Pakistan and all over the world. Action research is a powerful tool for change and improvement at the local level. It can be used in almost any setting where a problem involving people, tasks and procedures. It undertaken by the individual teacher, a group of teachers, working cooperatively within one school, or a teacher or teachers working alongside a researcher. Its combination of action and research has contributed to its attraction to researchers, teachers, academic and educational community. The scope of action research as a method is very impressive. It can be used almost in any setting where a problem involving people, task and procedure cries out for solution or where some change of features results in a more desirable outcome. It can be undertaken by individual teacher, group of teachers और with any researchers. यानी ये एक इंडिविजुअल टीचर भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ टीचर्स भी कर सकते हैं और इसके अलावा रिसर्चर के साथ भी टीचर मिलकर काम कर सकते हैं. बिकॉज एक्शन रिसर्च जो है वो कोई बहुत वास्ट लेवल पे नहीं होती है. इट ऑलवेज ट्रीटेड ऑन अ लोकल लेवल. Action research is focused on immediate application. इसलिए जब हम लोकल लेवल पे काम करें तो इसका मतलब है कि हमें उसका फौरी हल भी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो हमें लोकल लेवल पे आया है वो किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे. Action research in education is any systematic inquiry conducted by researcher, even principals, counselors or any other stakeholder which are working in the school or teaching learning environment. Action research is to provide teacher researchers with a method for solving everyday problems in school so that they may improve both student learning and teacher effectiveness. जब भी हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर जो बात होती है वो क्लासरूम या स्कूल सेटअप के अंदर होती है. एक्शन रिसर्च हमेशा लोकल लेवल पर, लोअर लेवल पर कंडक्ट की जाती है. इज इट क्लियर? नाउ द एरियाज इन विच एक्शन रिसर्च कैन बी यूज्ड, वेयर वी कैन यूज द एक्शन रिसर्च इन टीचिंग मेथड्स, लर्निंग स्ट्रेटजीज, evaluative procedure, attitudes and values, continuing professional development of teachers, management and control, and last is administration. Actually, action research can be used in variety of areas. For example, in teaching method, we want to replace a traditional method with a new and innovative method. So we will take help from the action research. In learning strategies, it is also useful because for adopting an interesting approach learning in preference to single subject style of teaching and learning. कोई भी लर्निंग स्ट्रेटजीज जब होती हैं, आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मेथड्स को अकॉर्डिंग टू द टॉपिक चेंज करना पड़ता है. सो ये सब कौन बता रहे हैं हमें? एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च एक्चुअली हेल्प अस
to modify our teaching behavior, to modify our teaching methods, our teaching strategies for betterment of the learning strategies of the students. For the betterment, for the enhance the knowledge of the students, to create the interest of the students, to enhance their capabilities of learning. So these two topics, teaching method and learning strategies, are very important areas of the action research. Next one, evaluative procedure. In evaluation procedures for improving one's method of continuous assessment. When we want to do assessment of the students, then we should need the new and innovative procedures or ways. अगर हम एक ही टिपिकल या ट्रेडिशनल वे से स्टूडेंट्स को असेस करेंगे, इस चीज को बिल्कुल इग्नोर किए बगैर कि वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होंगे, वहाँ पे आईक्यू लेवल का डिफरेंस होगा, वहाँ पे स्लो लर्नर भी है, फास्ट लर्नर भी है, एक्टिव भी है, पैसिव स्टूडेंट भी है. हम लोग सबको अगर एक ही तरीके से असेस करेंगे तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा. So if we want to change the assessment procedure, we want to use the new or innovative assessment techniques, we should take help from the action research. Attitudes and values. For encouraging more positive attitude to work or modifying the student's value system with regard to some aspects of life, action research is very useful in this era also, because action research helps the students to modify their behavior, to value their behavior, to change their values, to change their attitudes. हम लोग उनका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. एक्शन रिसर्च के थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स के अंदर न्यू इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं. कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स. Definitely by the action research, improvement in teaching skills, developing new methods of learning, increasing powers of analysis, and of highlighting self-awareness and gradual introduction of the techniques of behavior modification. ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल नहीं है. स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए एक्शन रिसर्च नहीं यूज होती, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है. इसके साथ टीचर्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं, बिकॉज व्हेन टीचर्स gain new understandings about both their own and their students' behavior through action research, they are empowered to make informed decisions about what to change and what not to change. कहाँ चेंज लानी है, कहाँ चेंज नहीं लेकर आनी, ये डिसीजंस टीचर्स एक्शन रिसर्च के बाद ही लेते हैं. मैनेजमेंट एंड कंट्रोल and last one, administration. It is also very effective for the management and administration, because in management and administration also researchers and especially principals took help by the action research. It is also very helpful for them, because many observers have depicted action research as nothing more than the application of common sense or good management. बहुत से रिसर्चर ये कहते हैं कि एक्शन रिसर्च एक्चुअली फॉर द गुड मैनेजमेंट, फॉर द अट्रैक्टिव मैनेजमेंट, फॉर द गुड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूज की जाती है.